Hello dear friends, today we'll talk about size of tetrahedral void. That is the third void we're going to talk about. So tetrahedral void is basically formed by 4 spheres. So it is formed by 4 spheres. That is, we have for instance one sphere, that is the shaded one, and next 3 spheres are touching to each other on this particular sphere, and this is the void that is created by 4 spheres is known as a tetrahedral void. So we have one sphere down that's marked as black, and we have 3 spheres on it, on that particular sphere that's marked as blue, and the void created is basically known as tetrahedral void. ये जो tetrahedral void है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं in terms of cube. So we represent, so TD void is represented, or we can say tetrahedral structure in other words. Tetrahedral structure in other words is represented by a cube with particles, we can say atoms, molecules, ions. They are also called as spheres with particles alternately placed. With particles placed alternately, or we can say with particles alternately placed. That is, so आपके पास एक cube है, you are having a cube over here. In this particular cube you are having particles. अगर आपने एक particle यहाँ डाल दिया है तो you cannot place the particle here, वो adjacent होगा. You have to place the particles alternately. So you can place the second particle here, you can place the particle here, but here and here. So these are the 4 spheres which are placed alternately to each other in a cube. This marks a tetrahedral structure. अगर आप इसको एज्यूम करेंगे ये 3 स्फीयर्स नीचे है और ऊपर एक स्फीयर है, तो इन बिटवीन जो यहाँ पे वाइड क्रिएट होती है, आई विल मार्क इट एज येलो. दिस इज द वाइड जो इन बिटवीन है. अगर ये 3 स्फीयर्स आप कंसिडर करेंगे, ये 3 स्फीयर्स ऐसे है, ठीक, ये जो ट्रायंगुलर वाइड है और ये 3 स्फीयर्स ऐसे है, तो ये जो ऊपर वाला स्फीयर ये आपने इन 3 स्फीयर्स पे डाल दिया है, तो यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर स्फीयर पुट ऑन these 3 spheres. जो अंदर एक void बन गई है, that's actually a TD void. वो जो TD void है वही यहाँ पे मैंने represent की है in terms of yellow color. So this is actually a tetrahedral void. Now since I have represented it by means of a cube, so हर एक side cube का बराबर होता है, तो this I kept as A, this is B and this is C, this point is C, and ये जो point है यहाँ पे D हम मान लेंगे. तो अगर हम इनको join करेंगे ऐसे, ये बनेगा ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल एट सी. एंड अगर आप इसको बी को डी से ज्वाइन कराएंगे ऐसे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल एट ए, एंड दिस इज द राइट एंगल एट सी. नाउ if the length of the cube, if the length of edge of the cube is a, then you can easily find in right angle triangle, in a right angle triangle ABC. आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ABC वाला. यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस इंप्लाइज आपका जो AB है, AB स्क्वायर है, दैट्स दिस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. So BC square plus AC square, that is the Pythagoras theorem. This implies AB square will be equal to BC is equal to A, AC is also equal to A, because length of edge we have assumed to be as A, so it becomes A square, that's equal to 2A square. So AB square जो है वो बन गया है आपका कितना, 2A square. और we can write in another way also, AB किसके बराबर होता है, A और B.
ए और बी एक्चुअली बराबर होता है आर का, बिकॉज वी आर बेसिकली टेकिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर एज आर। जो स्फीयर का रेडियस है वो लेते हैं हम कैपिटल आर। जो साइज ऑफ वाइड है, जो अंदर वाइड बनती है, उसका हम लेते हैं स्मॉल आर। तो इसका जो है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। सो ए एंड बी, दीज आर द टू स्फीयर्स टचिंग ईच अदर। सो रेडियस ए बी विल बी इक्वल टू इसका आर और इसका आर हो गया 2r। आप कंफ्यूज नहीं होना इस वजह से कि ये जो स्फीयर से ये दूर दूर है, एक्चुअली दे आर नॉट अवे, दे आर बेसिकली टचिंग ईच अदर। सो दिस इज द पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर। We are basically representing this tetrahedral structure by means of this cubic structure, and A and B spheres are not away from each other. Basically, they are touching each other. So you have this R and you have this R. That's equal to 2R. So AB is actually equal to 2R. So we can write 2R whole square will be equal to 2A square. This implies आपका 2R whole square will be equal to root 2 into A whole square. 2 का स्क्वायर नहीं था तो इसका रूट किया हम लोगों ने। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज R will be equal to root 2 divided by 2 into A. A is the length of edge. ये निकला आपको रेडियस ऑफ स्फीयर। दिस यू कैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर R. नाउ हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। सिमिलरली अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ABD. दिस इज राइट एंगल्ड एट A. So again in right angular triangle ABD, which is right angled at A, you can again apply Pythagoras theorem. So hypotenuse will be BD, so BD square will be equal to AD square plus AB square. So you can see BD square will be equal to AD square plus AB square. मतलब BD square, that is B and D, BD square will be equal to AD square and AB square. Now BD square is equal to, अब AD square किसके बराबर होता है? AD is basically A, length of edge, and AB आपने AB calculate किया 2A square, so you can put the value here. So you are getting here A square plus 2A square, and that will be equal to 3 into A square. This is BD square. But जो ये BD है, BD किसके बराबर होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्फीयर है, इसका R आएगा, और बीच में आता है इसका एक वाइड, दैट गिव्स यू 2 times R, स्मॉल r, बिकॉज ये डायमीटर कहलाएगा। और यहाँ पे आपको स्फीयर कोई दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली देयर इज स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये एक्चुअली टच कर रहा है अपोजिट के स्फीयर से। अगर आप ये लेंगे, सपोज ये वाला लेंगे पॉइंट B, तो ये वाइड के थ्रू जाके यहाँ पे ये स्फीयर को टच करता है, इस वाले स्फीयर को। अगर ये स्फीयर है सपोज D, सो ये वाला स्फीयर B है, तो ये वाला स्फीयर D पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये स्फीयर और ये स्फीयर टच कर रहा है, बीच में एक वाइड आती है, दैट्स कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड। सो एक्चुअली यहाँ पे आपको स्फीयर नहीं दिख रहा है, बट देयर इज स्फीयर विच इज टचिंग दिस स्फीयर, वो यहां से हम लोगों ने बनाया। सो एक्चुअली दिस इज R, एंड ये स्मॉल टाइम्स 2R होगा, और यहाँ पे दूसरे स्फीयर का दूसरा रेडियस आएगा। So you are having actually 2 times capital R and 2 times small r. So BD is actually equal to, but BD बराबर होता है 2 times R plus 2 times small r. Diameter of wide and एक स्फीयर का R और दूसरे अपोजिट स्फीयर का दूसरा R, वो कहलाएगा 2R. तो put the value here, what you get is, you are getting basically 2 हम कॉमन निकालेंगे, it becomes R plus R का होल स्क्वायर, that will be equal to root 3 into A whole square. 3 का रूट नहीं था तो हम लोगों ने रूट किया ताकि इसका स्क्वायर बने। स्क्वायर और स्क्वायर अब कैंसिल हो जाता है, तो यू आर गेटिंग R plus R will be equal to root 3 into A. ये 2 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड by 2. So this is equation number 2. Now divide second by first, we get divide equation second by first, we get, so what we get is, we are getting R plus small r divided by capital R will be equal to, मतलब R plus R divided by this R will be equal to root 3 by 2 into A divided by root 2 by 2 into A. So you are getting root 3 divided by 2 into A whole divided by root 2 divided by 2 into A, and this is equal to root 3 divided by root 2.
यहाँ पे निकलेगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई आर, दैट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई √2. दिस इम्प्लाइज आर डिवाइड बाई आर विल बी इक्वल टू √3 by √2 minus 1. तो this implies तो r is basically the radius of OH wide. This is the tetrahedral wide, so a radius of TD wide divided by radius of sphere will be equal to, जब आप सॉल्व करेंगे it comes out to be 0.225. This implies the radius of TD wide will be equal to 0.225 times capital R. So once you know the radius of sphere, you can easily find the radius of tetrahedral wide. I hope you understand it. This is how you calculate the radius of void, that is tetrahedral wide, by this way. And up to now we basically finished finding the size of voids. First of all, we did find the size of triangular void, then we switched on to size of tetrahedral void, then octahedral void, and now we are having all the three with us. That is, we'll write some remarks. First of all, आपको पता है size of triangular void किसके बराबर होता है? So size of triangular void is equal to 0.155 times capital R. ये आपको निकाला था already. The link is placed in the description. आप वो देख सकते हैं वो वीडियो. Next also size of octahedral void भी हम लोगों ने निकाली थी. That came out to be 0.414 times capital R. इसका लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. And now we find the size of tetrahedral void, and that comes out to be 0.225 times capital R. From the three, it's clear that size of octahedral void is greater than size of tetrahedral void is greater than size of triangular void. This is the point you can note. Second point, number one point. Second point you can note is that चूंकि void जो है हमेशा smaller बनती है as compared to that of sphere. So since we can write the point here, since void is always, we can write like this, since void is usually smaller than sphere, hence it's usually occupied by cations, because cations are smaller. तो मतलब ये कि radius of void जो है divide by radius of sphere, ये that will always be less or equal to 1. अगर आप यहाँ देखेंगे triangular का कितना है, radius of triangular void divided by करिए r means radius of sphere, that is 0.155, so less than 1. 0.414 less than 1, 0.225 less than 1. So ये जो है usually less or equal to 1 ही होता है. That is the second point we note. Third point we can note also. The third point is ये जो voids बनते हैं, they acquire importance. Formation of voids acquire importance in the formation of borides, transition metal carbides, hydrides, nitrides, etc. मतलब ये कि जो voids बन गई है, क्योंकि void स्मॉलर है, इनमें स्मॉलर एटम्स ही जाएंगे. सो अगर बोरान जाएगा तो ट्रांजिशन मेटल बोराइड्स कंपाउंड बनेंगे, अगर कार्बन जाएगा तो ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड्स जाएंगे, हाइड्रोजन जाएगा तो ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे, सिमिलरली नाइट्राइड्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल टाइटेनियम कार्बाइड हमारे पास एक कंपाउंड है. इसका मतलब ये हुआ कि टाइटेनियम क्रिस्टल जब बनता है तो उसमें वाइड्स क्रिएट होती हैं, उन वाइड्स में चला जाता है कार्बन. सो दिस फॉर्म्स अ टाइटेनियम कार्बाइड क्रिस्टल सिस्टम. सिमिलरली आपके पास टाइटेनियम हाइड्राइड है, TiH2. सिमिलरली आपके पास Mn4 कार्बन, मतलब सॉरी दिस इज Mn4n, दैट्स नाइट्रोजन. सो दिस इज द नाइट्राइड ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज आपके पास क्रिस्टल है, उसमें वाइड्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें जो चला जाता है नाइट्रोजन, इट फॉर्म्स मैग्नीज नाइट्राइड क्रिस्टल. सो सिमिलरली यू हैव आयरन हाइड्राइड्स.
etc. So these are some of the examples of, इनको बोलते हैं नाम, these compounds are called as interstitial compounds. These compounds are called as interstitial compounds. Interstitial compounds, because voids का दूसरा नाम है interstitial sites. That's why they are called as interstitial compounds, because these atoms go into the vacant spaces, or we can say voids. So एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, number fourth point, that is, so number fourth point is, for each sphere, हर एक sphere के around there is one OH void but 2 TD voids. ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है एक क्रिस्टल में, तो देयर विल बी ओनली वन OH void. अगर आपके पास एक स्फीयर है, बट देयर विल बी 2 tetrahedral voids. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, बिकॉज दिस कैरीज इंपॉर्टेंस जब हम निकालेंगे फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल्स, तब इसका जिक्र आएगा. वन मोर पॉइंट, इफ यू वांट टू हैव अ कंपैरिजन ऑफ TD एंड OH void, सो TD void अगर का कंपैरिजन करेंगे तो इसका साइज जो है दैट इज अराउंड 0.225 टाइम्स कैपिटल R. इसका साइज जो है दैट इज अराउंड 0.414 टाइम्स कैपिटल R. नेक्स्ट इज, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाइड का होगा 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड बनती है बाय 4 स्फीयर्स. सो इस वाइड के इर्द गिर्द कितने स्फीयर्स है? इस वाइड के इर्द गिर्द जो है अंदर वाली जो वाइड बनती है, दिस इज कॉल्ड एज a tetrahedral void. इसमें 4 spheres अराउंड है, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय 6 spheres. एंड टेट्राहेड्रल void में अभी मैंने बोला देयर इज 2 voids per atom, मतलब देयर इज 2 TD voids per atom per sphere, but there is only 1 OH void per atom. अगर आप स्फीयर एक ही लेंगे तो देयर विल बी 1 octahedral void, so 1 octahedral void. अगर आप स्फीयर एक ही लेंगे तो but there will be 2 tetrahedral voids. So this is a slight comparison of tetrahedral and octahedral voids, and octahedral void is larger than that of tetrahedral void. This is all about the size of voids we did talk of, and slight comparison and some remarks we also talked about. If you like these videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.